to come over the dais, and he'll be chairing this session. I also request Dr. Mohammed Sahib, who is a speaker today. Then Professor Shambhunath Tiwari ji, Dr. A.K. Munir, and one presenter, one speaker will join online. That is Alexander Jabbari. है वो ready है? Sir join कर चुके हैं? So Sajjad sir. Good morning, good afternoon. Good afternoon. I request Dr. Alexander Jabbari, please proceed with your paper. Thank you. Can you hear me well? Yes. Okay, wonderful. Well, my thanks to Professor Imtiaz Hasnain Saab for inviting me to take part in this exciting conference. My paper is titled The Sacred Grammar of Persianate Islam. As we all know, from about the 9th to the 19th centuries, Persian was a major world language, linking together a Persianate world of letters from the Balkans to Bengal and beyond. Part of the academic conversation around the Persianate in recent years has been about the utility of this scholarly neologism. The word Persianate, of course, originates in English. It is Marshall Hodgson's coinage from the Venture of Islam. And so it is not a translation of a Persian term. For Hodgson, Persianate zone in the northern and eastern parts of the Islamic world was the region where Persian was the language of high culture, in contrast to places elsewhere in the Islamic world where Arabic dominated. So Hodgson is working with a number of oppositions in the study of Islam between the Persianate zone and the Arabic-dominated zone, and between Islam as a religion and what he saw as Islamicate culture, of which Persianate culture was a subset. So on the one hand, he saw Islam proper as being concerned with personal piety, as opposed to culture, which in the Islamic context for him revolves around adab, which we might translate as refinement, ethical norms of sociability that are embodied in belletristic literature. More recently, in 2015, Shahab Ahmed rejected Hodgson's division between religion and culture, identifying how this imposes a kind of Protestant paradigm on Islam that is ill-fitting. Ahmed instead argued that something like adab, Persian poetry, for example, is just as Islamic as tafsir or Quranic commentary. Yet Ahmed maintained another of Hodgson's divisions, which is between what Hodgson called the Sharia-minded Muslims, for whom the Sharia, the divine law, is central, and others like some of the Sufis who are more oriented towards adab. So Ahmed's intervention is, again, to suggest that one approach to Islam is not more Islamic or more authentic than the other. Now, one of the things I want to suggest in this talk is that looking at grammar helps us overcome this kind of division between a Sharia-oriented Islam that is concerned with law and jurisprudence and hermeneutics versus an adab-oriented Islam that is concerned with poetry and ethical norms and Sufism. Both of these traditions, if we are to accept this sort of division in approaches to Islam, both of these approaches
take grammar as their starting point. Grammar is the basis of a madrasa education, of the curriculum. It is absolutely central, crucial, unavoidable as the first pillar of Islamic education. Whether one is ultimately going to become, as a result of that education, a judge or a jurist or an adib or a poet. So I see grammar as part of the connective tissue that unites these different valences and trajectories within Islam. Now, returning to the discussion of the Persianate, all of the theorizing that I've just mentioned is happening, of course, in English. There's no agreed upon equivalent for the term Persianate in Persian. Yet the fact that Persianate is an etic term, an outsider's term, does not mean there was no emic understanding of a distinct Persianate sphere within the Islamic world. Aslıhan Gürgüzel's recent article offers fascinating evidence of that from 17th century Istanbul, where the Persian language served as a synecdoche for Persianate Sufism, or a kind of Mevlevi version of Islam. For someone like the Mevlevi Sheikh Ismail Ankaravi, whom she discusses, Persian was a truly Islamic language, and she identifies how, quote, a broader early modern preoccupation with lingua sacra, sacred languages, remains insufficiently explored, end quote. So another one of my aims in this talk is to take that as a starting point and to explore some additional evidence for an emic understanding of the Persianate, looking at a couple of examples from China, the Ottoman Empire, and India. Across these contexts, I'll argue that Persian functions as something like a sacred language. Now, again, that is not how most of the field of Persianate studies has typically conceived of Persian. The Persianate is instead often characterized as cosmopolitan, transregional, universal, not limited to a particular empire, a particular ethnic group, or indeed to a particular religion. As such, Persian was one of Eurasia's great cosmopolitan languages, those languages that transcend place and particularity to form worlds unto themselves. And this in contrast to the vernaculars, those spoken languages that lack the universal aspect and are more tied to everyday life in particular regions. Much of the scholarship on the Persianate or Persian Cosmopolis also emphasizes the worldly dimensions of the language. That's supposedly part of what gives it its universality. More specifically, Persian is what Sheldon Pollock called a cosmopolitan vernacular, which is to say that New Persian initially emerges as a vernacular of the Arabic cosmopolis around the 9th century, but does not remain only in that vernacular role. It goes on to form and constitute a cosmopolis of its own. Yet when we compare Persian with other cosmopolitan languages, we notice a curious difference. Unlike other world languages, Arabic, Sanskrit, Latin, and others, the Persian developed a formal grammatical tradition relatively late in its 1,000-year history as a lingua franca. And this is especially, so you can see here, within 150 years of the establishment of an Islamic caliphate, we have a fully fledged, sophisticated grammatical tradition in Arabic, works in Arabic that are systematizing Arabic grammar. Look at vernacularization taking place in southern India, the rise of Kannada to be a kind of cosmopolitan vernacular, a language of learning and power. Within 100 to 200 years of it assuming that role, we get a sophisticated tradition of grammatical writing in and about Kannada. We compare that with the trajectory for Persian, which is vernacularizing at just about the same time as Kannada in the 9th century.
But it's not until the mid-17th century, about 850 years or so later, that we get the first grammar of Persian in Persian. So it's a very different trajectory here. And this is especially remarkable when we consider how central codified grammar was to other languages. Sheldon Pollock, for example, argued that, quote, imperial language typically presupposed the dignity and stability conferred by standardizing grammar. And he considered grammar crucial to every language of the empire form. Yet while Persian grammar had been, touched on partially here and there in the margins of works on Arabic grammar or in the introductions to Persian dictionaries, the first formal grammar of Persian, written in Persian, was produced only so much later. So why so late? One part of that answer would have to do with differences in the grammatical structures of some of these languages. Sanskrit and classical Arabic have highly complex verbal morphologies and case systems, whereas New Persian grammar is very simple. So in part, it's a practical issue. There's more of a need to explicitly codify and then teach the grammar of a language like Arabic or Sanskrit or Latin than when compared with a language like Persian. And so we could see similar dynamics with Chinese. If you look at the bottom of my slide, where you see that the trajectory for Chinese looks more like Persian. Now, Chinese is even more analytic than Persian. It has no inflection whatsoever, so grammatically very simple to learn. And not unrelatedly, I think, we don't get a formal grammar of Chinese in Chinese until almost the 20th century, despite its incredibly long written tradition. So this is one factor that I think helps explain these different trajectories. Another lies in the source of linguistic authority. Sanskrit was seen as inherently sacred, the language of the gods, and so grammar emerged to describe and conserve sacred usage. Obviously, Arabic was similarly sacred as the language of the Quran. But Persian's authority, at least initially, was tied not to scripture per se, but to poetry. As such, Persian philological production focused on works of rhetoric, prosody, and poetics long before it turned to grammar. But formal grammar does eventually develop in Persian in 17th century Shandong on the eastern coast of China. Why then, and why there, so far on the margins of the Persianate world? So let me turn to that first grammar, Minhaj al-Talab, in 1660, whose author makes it clear that he's not working within an existing Persian grammatical tradition. There's no Persian grammatical works before him, and instead he's trying to kind of fit Persian into the mold of the Arabic grammatical tradition. He follows Arabic grammatical theory very closely, but he explains it and kind of unpacks Arabic grammatical terms in Persian. So in order to learn Persian with this text, one must have Arabic grammatical theory down, but then that theory is being explained in Persian. Really, the two languages are closely bound up with one another in Minhaj al-Talab, reflecting both the cosmopolitan vernacular nature of Persian, a language that is replete with Arabic loans and Arabic influences and Arabic references. But this also reflects the nature of Islamic education in China and really elsewhere in the Persianate world, where Persian was often taught in order to elucidate Arabic grammar and Arabic texts. This can be seen in the teaching methodology of Zhang Jimei and his protege, Sheyun Shan, the latter of whom describes his teaching methodology as follows. The students begin by reading 3 Persian texts. Now they're reading by rote. They don't know Persian yet. They don't understand what they're reading. But they read 3 Persian texts. Then they turn to works on Arabic grammar and rhetoric. And only after they have learned Arabic grammar do they read Minhaj al-Talab in order, quote, in order to understand the meaning of the Persian language. And then they start over again, rereading the same 3 Persian works, now with an understanding of Persian, before then adding higher level texts in both Persian and Arabic.
So ultimately, Persian and Arabic learning are so intertwined here that it's difficult to say whether one or the other, whether knowledge of one or the other, truly comes first. With this understanding of the text in mind, let us return to my question. Why is it here and now in 17th century China that we get the first formal grammar of Persian in Persian? Now, unlike somewhere like Mughal India or elsewhere in the Persianate world, in Qing period China, Persian was not a language of statecraft or power. It was cosmopolitan in the sense that it was not local. It was not a language of everyday exchange in the home or on the streets, but neither was it worldly. In China, Persian was used almost exclusively as a language of Islamic learning. 7 of the 13 texts that made up the core of the Chinese Islamic curriculum were in Persian. Chang Jime makes the Islamic nature of Persian clear in Minhaj al-Talab's introduction. He says his impetus for composing this Persian grammar is that scholars had only addressed Arabic grammar, despite the fact that, quote, most books of fiqh, Sufism, and tafsir are in Persian. So without a manual, there would be the risk of misunderstanding such works. And if a religious issue should come up and people seek a fatwa from a scholar, the scholar might not be able to give a correct answer. And furthermore, teachers can inadvertently distort the texts that they teach out of ignorance of Persian grammar. And the word he uses for distort is tahrif, which is usually associated with the corruption of sacred texts. So in this context, Persian becomes a sacred language of Islam just as much as Arabic, and there you have it. Suddenly you need a grammar. This remains true much later in Chinese Islam. I've just started working on another grammar of Persian from China. This one is called Kimia al-Farisiya, The Alchemy of Persian, from 1895. It's written in Arabic. And here, right at the beginning of the text, sorry, it's not the red box that you see here. My slide is not playing right, but on the first folio, on the right-hand side, we get a really similar justification for why does the author write a grammar of Persian. He says, the best of languages is Arabic and then Persian, for these two are the languages of the people of paradise. As he, the prophet, said, the languages of the people of paradise are Arabic and Dari Persian, meaning the eloquent form of Persian. This is not something, this is not a hadith that just appears here. This is discussed in the Hanafi fiqh manual, Ad-Durr al-Mukhtar, for example. And the idea, of course, goes back much earlier. And then on the right here, sorry, on the left here, he goes on to explain that there are many Persian books on tafsir, fiqh, tawheed, and Sufism in our country. So the beginner must know Persian grammar in order not to err in understanding Persian books. Again, notice that for him, there's no division between the Shari'i sciences like tafsir and fiqh on the one hand and Sufism on the other. And what unites all of them is grammar. Now, there's much more I could say about this and the sort of Persian grammatical tradition in China, but I'm going to move on. For those who are interested, I've just published an article on that first Persian grammar from China, Minhaj al-Talab, in History and Theory, and that's available open access. But I'm moving us now to the Ottoman Empire. Excuse me, Dr. Alexander. Yes. Could you please conclude? No, I'm sorry. I thought this was. I was told I had 30 minutes for this talk. Okay, I apologize because of the paucity of time. I've been requested to remind you to conclude. Okay, this is not the amount of time I was told that I had to deliver this talk, but I will conclude with just this example then. Thank you.
Thank you so much, Dr. Alexander, for your insightful paper on the sacred grammar of Persianate Islam. Now, with the permission of the chair, I would like to invite the second speaker, Dr. A.K. Munir. Yeah. Dr. A.K. Munir is an assistant professor in the Department of English at Aligarh Muslim University. Okay, thank you. Thank you so much for coming. So my paper is titled The Solution of Text into Life. And I want to use this expression in order to talk about a multilingual literary culture on the Malabar coast, that is Arabic Malayalam. Yes. So to begin with, let me quote Ibn Arabi from his, who says in his Al-Futuhat al-Makkiyah, the Meccan illuminations, أول ما أمر الله به عبده الجم وهو الأدب. The first thing that God has asked his servants to do is to gather, al-jam, and that is adab. وهو مشتق من المأدبة. Adab is derived from ma'duba, which is banquet, gathering to eat. So I want to linger with this idea of adab, rather than rush to the word category literature when I want to talk about the literary culture of Arabic Malayalam on the Malabar coast. Because here, rather than literature, what can literature capture? The concept of adab, which is both literary form and moral context in some sense. The double meaning of that adab is so central to the literary culture that I am talking about. And that's, again, the word, the solution of text into life indicates. Here I am borrowing from Talal Asad, who is influenced by the linguistic philosophy of Ludwig Wittgenstein. So we always turn whatever people do into something like a text, which we can read and explicate, in terms of bringing out its meaning and so on. But much of what we do, including literature or adab, in an everyday life, is not translatable in that sense, but rather here the text itself becomes actual living. So there is a way in which when people actually do lots of things with literature or adab or text, and here I have in mind these performative dimensions of this literary culture I'm talking about. So there are moments when these practices actually do not translate into something that they mean, but rather they actually enact what life is. And that is why I'm using this phrase, the solution of text, symbols, signs into life. Another word about the other keyword that I am using in my study, which is literary formation. I define tentatively what I call the Mapila literary formation, which is a literary culture based on Arabic Malayalam, these hybrid dialects on the Malabar coast. It is a constellation of people who are made up through their shared acts of composing, disseminating, singing, reciting, reading, and listening to Mapila literary works. Devotional performance genres such as the Mala in particular. So these are a few keywords I use in my title, and a lot of what has been said about the
various cosmopolis which flourished in South Asia and elsewhere, Sanskrit, Arabic, Persianate, and so on, Hindustani even, they're all in the background of the paper I'm sharing with you, but I will keep them in the background and cut to the chase. So Arabic Malayalam, best understood as a hybrid dialect formed in the crucible of transoceanic cultural encounters on the Malabar coast, employs Malayalam grammar, Arabic script, and a lexis drawn not only from Arabic and Malayalam, whose union is signified by the name Arabic Malayalam, but also from several other languages such as Tamil, Sanskrit, Urdu, and Persian. This literary culture pride itself on a remarkable wealth of literature in verse and prose, covering a wide range of themes and concerns, and therefore rightly assumes the status of the literary language of Mapilas on the Malabar coast. At least from the early 17th century, when the earliest extant work in this linguistic tradition, that is the Muhyiddin Mala of 1607, appeared on the scene. Although we have little or no information on Arabic Malayalam orature or textual tradition prior to the early 17th century, the oldest preserved Arabic Malayalam poem, Qali Muhammad's Muhyiddin Mala, suggests beyond doubt that the devotional performance genre of the Mala is the most formative, enduring, and prototypical of Arabic Malayalam literary works, which have come down to us. This is a devotional performance genre, and therefore the performative dimensions of this text have to be appreciated in any discussion of a literary culture which primarily is embedded in such performative practices. So let me say a couple of things about this genre just to familiarize ourselves with this literary culture. The Mala literally means garland, is a devotional performance song poem that venerates a revered Islamic figure such as a Sufi by narrating the glorious events of his or her life. Interestingly, the Mala often speaks about itself in a lapidary idiom, where the trope of garland weaving is prominent, as the following passage from the Muhyiddin Mala shows. I quote, "In the Malayalam year 782, I wove this garland in 155. Like pearls and rubies strung together as a whole, wove I the garland of Muhyiddin, O the people of the world. Muttum manikyavum onnai kortapol, Muhyiddin malane korte nyan logare." Such tropes as that of pearls and rubies, these are a few, the sampling of the manuscripts of this text I'm talking about. So this lapidary idiom, which self-consciously the texts actually talk about, is very much crucial to an understanding of the performative dimensions of these texts. The Mala as a genre assumes the pride of place in the pantheon of Mapila literary culture, not only because the earliest extant Arabic Malayalam work belongs to this genre, but also because the Mala has been part and parcel of Mapila devotional life, both historically and contemporaneously. Various Malas which treat of important Islamic figures, so beloved and revered of Mapilas, are sung of for their meritorious value. It is remarkable that the Mala self-reflexively makes an explicit claim to its recitative use and performative value. So there is very much textual evidence to suggest that these are texts which come to life in performance. To those who recite this Mala without error and omission, will Lord give a mansion in paradise. Whoever copies this Mala without error, they will not meet with any misfortune, you know full well. Allah's blessings are due to the one who said like this, and to those who sing and listen to this. So these practices of not only composing, producing, disseminating, copying, listening to, and living this text, this is what is at the heart of the Mapila literary formation I am describing here.
Now, Mapila scholars writing in Malayalam have noticed the phenomenal popularity of the Muhyiddin Mala and other Malas as exemplary devotional performance song poems among Mapilas. Notwithstanding the fact that it is exclusively the work's literariness that has been the cause for celebration in prevalent scholarship. The wider, massive appeal of the Mala assumes salience when it comes to appreciating the shared practices and expressions of piety through which the Mapila literary formation has been constituted. However, Mapila scholars have noted that Mapilas used to recite, and this is a historical sort of a reconstruction, but they are also relevant for the contemporary moment. And I have done an ethnography of how the Mala actually informs ethical formation, in contemporary Malabar. But here we are talking about a historical sort of a reconstruction of how this genre actually shaped, the selfhood of the ethical selfhood of many Mapila men and women. Mapila scholars have noted that Mapilas used to recite or sing Muhyiddin Mala in their homes daily, most especially at night after Maghrib, the sunset prayers, although these scholars have barely gone beyond flagging this fact. Even when betraying theological discomfort with devotional piety formative of Mapila literary culture, scholars like Maulavi and Karim, in their pioneering survey of Mapila literature, acknowledge the performative status of Muhyiddin Mala in Mapila devotional life. Although theologically, they have a discomfort with such devotional performance practices. I quote, Kerala Muslims in almost all households used to sing this, that is Muhyiddin Mala, daily after the sunset prayers with devotional fervor. When asked about the educational credentials of a Muslim girl, and this is something which has now become part of Mapila lore, that is, when asked about the educational credentials of Muslim girls during matrimonial proposals, the typical answer was that she had learned the Quran and Muhyiddin Mala. Much similar to the status of Behishte Zevar, in North India and elsewhere. Because Muslims held the Mala in such high esteem and devotion, it survived generations despite the absence of printing. So the end of quote. The Muhyiddin Mala has been central to domestic devotional piety for Kerala Muslims is further attested to by Mapila women's great fascination for this Mala. Women used to sing the Mala in our households, and this is an anecdote I collected from practitioners. Women used to sing the Mala in our households after the sunset prayers. They used to sing the Mala seeking speedy recovery from illnesses and easy childbirth. The Mala was used to be sung even at weddings in Mapila homes. Now, this does not mean that this is an exclusively female activity, but scholars have already noticed the female fascination for this devotional performance genre, among other things. Now, central to this Mapila literary formation, the practice associated with the literary culture of producing, copying, singing, reciting, and so on, is the, how much? Okay. Central to the practice of the Mala recitation is a veneration of a revered Islamic figure by extolling his or her virtues and miracles, which is ultimately taken to be a righteous and virtuous act worthy of reward. In other words, reciting the Mala is understood primarily in terms of the generation of religious merit or numinous value it creates, the activation of the auspicious power imputed to revered Islamic figures, and the anticipation of seamless divine rewards. So this is how the text dissolves into life. In this vein, how do we understand literature? What is literature ontologically? What is the essence of literature? In order to understand that, we have to look at what actually people do with literature as well. And when we notice the practices, or to quote Austin, the famous British linguistic philosopher, right? People's ways of doing with text. What are these people's ways of doing with text? In the case of Muhyiddin Mala, these various practices of not only producing, but also copying, disseminating, even printing,
and most importantly in this context, singing and reciting on various occasions, which actually punctuate daily life, not exceptionally, in a way that suffuses and infuses ordinary life. And how can we do a symbol hermeneutics here, just to try to understand the meaning of these practices by reducing them to some hermeneutical entity? Or if you really look at the practitioners, and I can see that in my own mother, who picks up this Mapila prayer book, and sings devotional text like this. And when I look at her prayerful, lips, I can see beyond the cultural hermeneutics. I can very well see how text dissolves into life. Thank you. Thank you, Dr. A.K. Munir, for sharing your research on Arabic, Malayalam, and Mapila. Now, I would like to invite our next esteemed speaker, Professor Shambhunath Tiwari. Professor Shambhunath Tiwari is a distinguished professor in the Department of Hindi in Aligarh Muslim University. इस टेक्निकल सेशन में सदारत कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन साहब, ऑनलाइन जुड़े हुए डॉक्टर अलेक्जेंडर जब्बारी, डॉक्टर ए के मुनीर, समीना कोसन, और मेरे सामने लंच के बाद कुछ सुस्त से हुए सभी मेरे सम्मानित दोस्तों, साथियों, मित्रों। बड़ा मुश्किल होता है लंच के बाद का सेशन, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितने लोग हैं, सवाल ये है कि कौन लोग हैं, और ये कौन लोग हमारे लिए मायने रखते हैं। तो मैं कितने लोगों में नहीं बोल रहा हूँ, कौन लोग हैं यहाँ, मैं उनसे मुखातिब हूँ। कुछ बातें साझा करूँगा, जिस तरह से सुबह से बातें हो रही हैं, कुछ बातें मेरे मन में भी हैं। उनमें से अगर कोई एक बात भी आप तक पहुंचती है तो मेरा यहाँ आना और इम्तियाज़ हसनैन साहब का बुलाना मैं सार्थक समझूंगा। मित्रों, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको कहा जाता है कि ये कंपोजिट कल्चर है, मिली जुली साझा संस्कृति की बात हम लोग करते हैं। उर्दू हिंदी को एक ही मानने की भी बात अभी की गई है। निसंदेह उर्दू हिंदी जहाँ से चली हैं और जहाँ तक वो एक है वहाँ तक मानने में कोई हर्ज नहीं है। यही कारण है कि हम लोग दखनी को दखनी उर्दू कहते हैं और उत्तर के लोग हम लोग दखनी हिंदी कहते हैं। कम से कम दखनी तक तो हमारा साथ है। उसके बाद यह भी हकीकत है कि ज्ञानचंद जैन की किताब दो जुबान, एक जुबान, दो अदब, दो लिखावट, बावजूद इसके हिंदी और उर्दू दो अदब हैं। यह भी सही है कि लिसानियात के नज़रिए से दो जुबानें नहीं हैं, लेकिन अदब तो दो है। मगर ये जो साझा, जहाँ तक साझा है अपना, वहाँ तक मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ये कि हिंदी के लोग अपनी शुरुआत खुसरो से करते हैं और उर्दू के लोग भी अपनी शुरुआत खुसरो से करते हैं। दखनी मैंने कहा आपकी भी, हिंदी की भी है और उर्दू की भी है। प्रेमचंद पे जितना हक उर्दू का है उतना ही हक हिंदी का है। और इस तरह की तमाम सारी मिसालें मिल जाएंगी आपको, जिसके आधार पे, जिसके बिना पे हम कहते हैं कि उर्दू हिंदी में कोई फर्क नहीं है। मैं एक हिंदी अदब का तालिब इल्म हूँ और उस तालिब इल्म के हैसियत से जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि जो हिंदुस्तान, ये पूरा जो हिंदुस्तान है, एक रंगीन खूबसूरत चादर की तरह है, जिसमें एक ताना है और दूसरा बाना है। ताना अगर हिंदू है तो उसका बाना मुस्लिम है,
और हम ये जानते हैं कि बिना ताने बाने की चादर बिनी नहीं जा सकती। और उसका जो कलर है, बाकी जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो उसके बेलबूटे और कलर है। जब हम पूरे उस चादर की खूबसूरती को मुकम्मल तौर पर देखते हैं तो हमें ताने बाने का भी ख्याल रखना होगा, हमें उसके बेलबूटे और खूबसूरती का भी ख्याल रखना होगा, और उसके जो मुख्तलिफ कलर है, रंग है, उसका भी ख्याल रखना होगा। अगर एक भी धागा बदरंग होता है या टूटता है तो पूरी चादर खराब होती है। कितने लोग, हिंदुस्तान की पूरी तारीख, बाहर से आकर लोगों के बसने का इतिहास है। पर्शियन आए, यवन आए, हूण आए, शक आए, कुषाण आए, यूची आए, मंगोल आए, तुर्क आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगीज आए, और आकर यहाँ जो बसते गए, कुछ आए और आकर चले गए और कुछ यहीं की सरजमीन में बस गए। फिराक का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। तो वो जो काफिले बसे और हिंदुस्तान बना, उस बनने में न जाने कितने कलर मिले हुए हैं। हमें कम से कम उसको समझना होगा। और उसी खूबसूरती से जब दो ज़ुबानें हमारे सामने आती हैं, मैंने कहा उर्दू और हिंदी में कोई फ़र्क नहीं मानते हैं, उससे जो एक हमारा जो साझा जो रूप बनता है, स्वरूप बनता है, वो देखने लायक है। अभी पिछले सत्र में कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की माँ है। जो हमारे हिंदुस्तान की जुबानें हैं उनमें संस्कृत सबकी मदर। ऐसा नहीं है। हम हिंदी को संस्कृत से निकली हुई भाषा नहीं मानते। संस्कृत से भाषा अगर हिंदी निकली है तो वो उतना ही सच है जितना हम कह दें कि फारसी से उर्दू निकली हुई है। जबकि हम सब जानते हैं कि फारसी से उर्दू का जन्म नहीं हुआ है, उसी तरह से हिंदी का भी संस्कृत से जन्म नहीं हुआ है। हर जमाने में जब एक एलिट क्लास की लैंग्वेज होती है तो एक बोलचाल की भाषा होती है। बंगला में साधु भाषा और चलित भाषा का कंसेप्ट है। तो एलिट क्लास की भाषा जब संस्कृत थी, संस्कृत का मतलब ही होता है पॉलिश्ड, संस्कृताइज्ड कर देना, उसको पॉलिश्ड कर देना। उसी के समानांतर जो बोलचाल की भाषा है प्राकृत, वो जो नेचुरल लैंग्वेजेज हैं वो हिंदी का उत्स हैं, वहां से निकल कर आती है। वो उर्दू भी वहीं से आती है। इसलिए एक ही खानदान से निकली हुई दो जुबानें, दुनिया के किसी भी मुल्क की जुबान में इस तरह इतना करीबी रिश्ता नहीं है। तमाम सारी बातें कही गई हैं, लेकिन ये जो सबसे अच्छा इसका हिस्सा है वो ये है कि जुबानें किस तरह से एक दूसरे से लेती हैं, कैसे बातों को, चीजों को, साझा जो चीजें हैं उसको कैसे ग्रहण करती हैं, ये हमारे जानने की बात है। संस्कृत को हम बहुत कदीम लैंग्वेज मानते हैं और संस्कृत में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि आगे चलकर हिंदी वालों ने, उर्दू वालों ने, बल्कि पंजाबी में, बल्कि मराठी में सब जगह जाती हैं। यही साझा संस्कृति का एक खूबसूरत पहलू है। इसी पर मैं 2-4 मिनट बात करूंगा। मेरा ख्याल है कि मुझे बीच में मैडम कोई पर्ची नहीं देंगी, मैं अपनी बात कह लूंगा बहुत थोड़े में। संस्कृत में एक छंद है, अधः पश्यसि किम वृद्धः किम तौ पतितं भुवि। एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, झुका हुआ, बिल्कुल बेंट हो गया था, जमीन में देखता हुआ जा रहा था। कुछ मंचोले ने पूछा, हे बुड्ढे, जमीन में क्या देख रहे हो? अधः पश्यसि किम वृद्धः, हे बूढ़े नीचे क्या देख रहे हो? किम तौ पतितं भुवि, तुम्हारा क्या खो गया है? तो उसने जो जवाब दिया, रे रे दुष्ट न जानास गतम यौवन मौक्तिकम। अरे दुष्टों, नहीं जानते हो, मेरा जीवन रूपी मोती खो गया है, मेरी जवानी रूपी मोती खो गई है, उसे मैं ढूंढ रहा हूं। आप देखिए इस अंदाज को किस तरह से उर्दू वाले लेते हैं और कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि खम इसलिए हुआ कि मेरी झुक गई कमर, मैं झुक के ढूंढता हूं जवानी किधर गई। लेकिन देखें आप किस तरह से संस्कृत में गतम यौवन मौक्तिकम, जीवन रूपी मोती, और मैं झुक के ढूंढता हूं जवानी किधर गई। तो जब एक जुबान से दूसरी जुबान में भाव, मैंने कहा ना कि भारतीय भाषाएं जितनी हैं अलग अलग हैं, लेकिन उसमें जो भाव है वो एक ही है, जो इमोशंस हैं। इसलिए कहा जाता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से पूरा भारत एक है। अनेकता में एकता की बात आप करते हैं, मैं कहता हूं एकता में अनेकता, उसको उल्टा आप कर दें तो भी जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है वो हमारे सामने
नजर आती है। हम थोड़ा सा और पोएटिक नजरिए से देखें तो ऐसा माना जाता है कि कविता का जन्म जो है वो करुणा से होता है, दर्द से होता है, दुख से होता है। वाल्मीकि के लिए कहा जाता है कि क्रौच द्वंद्व वियोगात्थ शोकः श्लोकत्वमागतः। जो श्लोक है वही छंद बन जाता है। शोकः तस्य श्लोको भवतो नान्यथा, उसका दर्द ही जो है वो कविता में ढल गया। इसीलिए तो कहते हैं, अंग्रेजी में कहा ना कि स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट द सैडेस्ट थॉट। मधुरतम है वे गीत जो वेदना में गाए जाते हैं। अकबर का एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है कि दर्द को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। वो जो इश्क का दर्द है, जो दर्द है, वो कवि बना देता है। ये जो दृष्टि है ये हमारे आदि कवि से लेकर और आधुनिकतम काल के कवियों की। अब सांस्कृतिक दृष्टि से देखें किस तरह से सांस्कृतिक संगम होता है, किस तरह से भावात्मक जुड़ाव होता है, किस तरह से संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत एक पहलू है। कहा जाता है कि कविता में जो सबसे सुंदर माना जाता है वो नाटक है, और नाटकों में जब से सबसे अच्छा जो माना जाता है वो शकुंतला नाटक है। और शकुंतला नाटक में जो सबसे अच्छा माना जाता है उसका चौथा एक्ट माना जाता है। उस चौथे एक्ट में जो सबसे अच्छा माना जाता है वो 4 छंद है, और उन 4 छंद में एक छंद है जिसमें जहां शकुंतला की विदाई होती है और उसके पिता जो है वो आंसू बहा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब शकुंतला विदा हो रही है तो मेरी ये हालत है। इस बात को सबसे पहले यूरोपियन कंट्री में सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में 3 प्ले ऑफ कालिदास, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया को बताते हैं कि भारत की संस्कृति ये है, ये कल्चर ये है। शकुंतला लीव्स टुडे, माई हार्ट चोक्स, माई केयर डल्स विजन, सच वीकनेस ड्यू टू मी, इन ए फॉरेस्ट ड्वेलर ड्यू टू लव, हाउ कैन टॉर्मेंटेड ए हाउस होल्डर, सिंपल हाउस होल्डर, when they send their daughter। आदरणीय मोहन जी बैठे हुए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि आज शकुंतला जाई सुन मेरो मन पुलात, गिर आंसू गदगद गिरा आंखिन कछ न लखात, मुझ बनवासिन को जो इतै सतावत मोह, तो गेही कैसे रहे कन्या प्रथम बिछो। लड़की के विदाई पर कैसे रहते होंगे गृहस्थ, ये उसका भाव है। या सत्यव्य शकुंतलेति हृदयम सस्पृष्टम उत्कंठया, कैसे रहते होंगे वो लोग गृहस्थ जो अपनी लड़की को अपने घर से भेजते होंगे। अभी संस्कृत में चीजें अंग्रेजी में आ गई, पूरा यूरोप जान गया। इसीलिए तो कहा उन्होंने कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लगा कि एक बहुत बड़ा तबका उस कल्चर से वाकिफ नहीं है, तो एक उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं मनवर लखनवी, उन्होंने शकुंतला को पूरा उर्दू में लिया और उर्दू में जब उसे उतारा तो मैं उसी छंद की बात करता हूं। देखें कितनी खूबसूरती से वो लेकर आते हैं और किस तरह से, अगर आप इसको न माने कि तर्जुमा है तो आपको लगेगा कि ओरिजिनल पोएट्री है, बिल्कुल क्रिएटिव राइटिंग। दिल की है आज कुछ अजीब हालत, हो रही है शकुंतला रुखसत, जब ये मुझको ख्याल आता है, दिल मेरा बैठ बैठ जाता है, जब तक गम कुछ कहा नहीं जाता, लब तक एक आह भी नहीं आता, सोच सा सोच है कुछ आहों में, है अंधेरा मेरी निगाहों में, रंज है गम अगर मलाल है यह, मुझ बनवासियों का हाल है यह, खानादारी है जिंदगी जिनकी, उन पर क्या हाल बीतती होगी, बाद शादी के जब लड़की को उसकी ससुराल भेजते होंगे। अब मैंने कहा कि भाषा चाहे कोई भी हो, लेकिन जो उसमें इमोशन बहता है, जैसे मैं कहूँ मनुष्य के शरीर अलग अलग हिस्से हैं लेकिन उनमें एक ही रक्त प्रवाहित होता है, उसी तरह से हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी कल्चर हैं, उसमें जो सांस्कृतिक प्रवाह है वो एक ही है। इसीलिए हम कहते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कल्चर, पूरा हिंदुस्तान एक है। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर आप राम कथा कहते हैं, चाहे मलयालम में हो, चाहे तेलुगु में हो, चाहे कन्नड़ में हो, सब जगह वही बात होगी। इसीलिए कबीर की बात को सत्तम जी कर रहे थे। कबीर को प्रेरित करने वाले कौन हैं? नामदेव हैं, मराठी के नामदेव हैं। कबीर जैसा कवि, संत कवि पंजाबी को कितना प्रभावित करता है कि जो गुरुद्वारों में रोज पूरी दुनिया में जो एक छंद बजता है, अल्लाह अव्वल नूर पाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे, ये कबीर का दोहा है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि दारा शिको फारसी में भगवत गीता का अनुवाद करते हैं। अकबर के दरबार में बहुत ऐसे कवि हैं जो कि संस्कृत के तमाम सारे क्लासिक्स का
फारसी में उसको लेकर आते हैं और अनुवाद करते हैं। हमें इस तरह से अपनी पूरी संस्कृति को, और मैंने कहा उर्दू और हिंदी में तो इतना करीबी है कि जो चीज़ें हिंदी में है वो जो उर्दू में आती हैं। एक वाकया याद आता है मुझे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोई स्कॉलर है जो अमेरिका में पढ़ाते हैं, तो वहाँ एक पंजाब, वहाँ पाकिस्तान का एक लड़का पढ़ता था। वहाँ हिंदी और उर्दू एक ही भाषा होती है, साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेज के रूप में। जैसे हमारे JNU में हिंदी और उर्दू एक ही डिपार्टमेंट में है, उसको भारतीय भाषा केंद्र कहते हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर साथी बैठे हुए हैं JNU के। तो वैसे वहाँ साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेज के रूप में हिंदी और उर्दू एक साथ पढ़ाया जाता है। तो वो लड़का पाकिस्तान पढ़कर आया तो उसके घर वालों ने कहा कि तुम बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हो। इत्तेफाक से उसका ननियाल यहाँ हैदराबाद में था। जब यहाँ आया तो यहाँ के लोगों ने कहा तुम बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। तो उसको परेशानी ये हो गई कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ या उर्दू बोल रहा हूँ। उसने टीचर को कहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बोले मियाँ इसमें मत पढ़ो, इस मसले में कि तुम हिंदी बोल रहे हो उर्दू बोल रहे हो, बात समझ में आनी चाहिए। शाने को खमदार गेसू से मतलब, मुसलमान से मतलब, न हिंदू से मतलब, और ख्यालात अच्छे तो बोली भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब। जब ख्याल आपके अच्छे होंगे तो आपकी बात पहुंचेगी, और बात पहुंचनी चाहिए। यही हिंदी का मकसद है, यही उर्दू का मकसद है, और यही भारतीय भाषाओं का मकसद है। हम जो दानिशमंद कहे जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, उनको इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। आपने देखा होगा एक आरती गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे। इसको लिखने वाला पंजाबी का आदमी है, सद्दाराम फिलौरी। आम आवाम के गायक बन जाते हैं कबीर, नजीर और मीर। आज जिसे आप उर्दू कहते हैं, इसका सबसे पुराना नाम हिंदी है। पिछले सेशन में बात आई कि हिंदवी, रेख्ता, गुजरी नाम है, लेकिन खालिक बारी में 13 बार हिंदी लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है और 55 बार हिंदवी लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। तो जिसे आप आज उर्दू कहते हैं, इसका सबसे पुराना नाम हिंदी है। और जिसे आज आप हिंदी कहते हैं, इसका सबसे पुराना नाम क्या है, मैं ऑडियंस में छोड़ता हूं, सोचिएगा। हिंदी नाम उर्दू का हो गया, तो हिंदी का सबसे पुराना नाम क्या हुआ? यही इसकी खूबसूरती है कि हिंदी उर्दू कैसे, किस तरह से मिलते हैं दोनों। तो जब हिंदी और उर्दू जब एक तरह से ही है, एक ही नाम है दोनों का, और तो और छोड़िए, मीर का एक शेर है, न जाने लोग कहते हैं किसको सुरूर कल्ब, आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी जुबान के बीच। 1852 में निकातो शूरा आता है, उससे पहले अदब के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है उर्दू लफ्ज। हिंदी, मीर अपने आप को हिंदी का शायर कहते हैं, वो अलग बात है। ज़बान हिंदी तब बहुत पहले सभी जुबानों को कहा जाता था, लेकिन उर्दू लफ्ज नहीं है, कम से कम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक। लेकिन जब वो बनता है, इतना सब कुछ एक होने के बाद, आखिर उस पर क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि दोनों अलग कैसे हुए, क्यों हुए? कहीं ऐसे पूरी दुनिया के इतिहास में है? अकबर बहुत मौजू लगते हैं कि वस्ल की सब हमने उस बुत से लड़ाई थी जुबान, ये असर उसका हुआ हिंदी से उर्दू लड़ गई। दो जुबानें लड़ी हों आपस में, इसका पूरे दुनिया के इतिहास में कहीं नजीर नहीं मिलता, लेकिन हिंदी और उर्दू में मिलता है। जो एक हैं वो लड़ती भी हैं, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, और फिर हम साथ रहते हैं। ये है हिंदुस्तान की तहजीब। हमें इसको समझना होगा। हमें इसको भी जानना होगा कि हिंदू मंदिरों में गाई जाने वाली सबसे बेहतरीन जो आरती नुमा भजन है, वो है मन तरपत हरि दर्शन को आज, बैजू बावरा। इसको लिखने वाले शकील बदायूनी, संगीत देने वाले नौशाद, और गाने वाले मोहम्मद रफी। और मंदिरों में भजन के रूप में गाने वाले कौन है, सब हम सब लोग जानते हैं। क्या इस हकीकत को भुलाया जा सकता है? इसलिए आज जो कुछ भी दिखाई देता है, उसके लिए मैं अगर अपनी बात यहां से कहूं, खत्म करूं कि कसूर किसका है ये बाद में समझ लेंगे, पहले कश्ती को तूफान से निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी सर, आपका अधिक धन्यवाद। आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने विचार साझा किए। Ladies and gentlemen, so far in this session we have had 3 speakers, and there was another speaker who could not join us for some reason. With the permission of the chair, I would now like to invite questions from the audience.
जी तो उनसे बुलवा लीजिए 2 बजे। उन्होंने इम्तियाज साहब को कहा भी। अच्छा ठीक है सर, ओके। उनका नाम सर, नाम बोलिए सर। Ajay Bisaria. Okay. So, ladies and gentlemen, there's a development. We have another speaker now who is joining us online, Dr. Ajay Bisaria. Yeah. Dr. Ajay, sir, can you listen? Can you hear me? Yeah. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। I welcome you to this session, sir. I request you to kindly share your thoughts. हियर मैं अभी सुन रहा था भाई शमुनाथ जी को, और कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से थी और कुछ और उनको सुन करके भी ताज़ा हो गई, तो मैं उनको आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। मेरे मन में कुछ सवाल हैं। पहले जो हम थोड़ा सा मेरा ख्याल है 5-7 मिनट का समय तो इस सेशन में होगा मेरे लिए। तो अगर हम ये देखें तो ये जो हिंदी और उर्दू की बात है, और उसके साथ फिर हम एक कंपोजिट कल्चर का तस्वुर हमारे पास है, हम इसको सोचने की ज़रूरत होगी। हिंदी और उर्दू के मसले में तो तिवारी जी ने बोल ही दिया, लेकिन ये जो साझा संस्कृति की बात है, मुश्तरका तहजीब की बात है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या ये हम वाकई भले के लिए कर रहे हैं? क्या ये दिमाग में हमारे जो आता है वो 2 अलग अलग आइडेंटिटीज को स्ट्रेस नहीं करता है? और वो 2 अलग अलग आइडेंटिटीज, अब शमुनाथ जी ने भी अभी कहा और लोग भी कहते हैं, घूण आए, शक आए, कुषाण आए, और दूसरे बहुत सारे लोग आए, पुर्तगीज आए। तो कंपोजिट कल्चर जिसे हम कह रहे हैं, उसमें जब हम झांक करके देखते हैं, उस पर जितना भी हमारे सामने विमर्श डिस्कोर्स जो हमारे सामने है, उसमें केवल हिंदू और मुस्लिम बसते हैं। और उसी की शायद उन्होंने जो वो दी थी कि ताना और बाना, उन्होंने नहीं बताया कि ताना क्या है और बाना क्या है, लेकिन शायद बैक ऑफ द माइंड यही रहता है। हम ये जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं कि अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में इतनी समानता है, भाषा के स्तर पर भी और कंटेंट के स्तर पर भी, उसको हम भूल जाते हैं पहले। उसके बाद हम ये जानते हैं कि अरबों के साथ और ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं। वो कॉन्सेप्ट नोट में इम्तियाज साहब ने उसको मेंशन भी किया हुआ है। हम इस चीज़ की कभी बात ये करते हैं कि बिफोर इस्लाम भी, इस्लाम के आगमन से पहले भी, क्या ये संबंध कुछ ऐसे थे जिनसे भाषाओं में कोई आना जाना हो रहा था, कोई आवाजाही हो रही थी? क्या हमारे रिलेशन उस वक्त सहज थे या इतने मुख्तलिफ थे कि हमारे जो मतलब एक दूसरे के साथ द्वंद्व में थे? इतिहास हमें ये बताता है कि ये द्वंद्व नहीं था। चाहे वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आने वाले अरब व्यापारी हों, जाहिर है कि उनके साथ उनकी भाषा भी आ रही थी और यहाँ से वो कुछ लेकर के भी जा रहे थे। 5-6 महीने उनको हवा के इंतज़ार में यहाँ पर रहना होता था। हम ये जानते हैं कि भावनगर में घोगा एक जगह है जहाँ पर भारत की सबसे पहली इबादतगाह मौजूद है, रही है, और वो इतनी पुरानी है कि ये भी माना जाता है कि वो शायद हज़रत मोहम्मद से और पहले की हो सकती है, लेकिन कम से कम उनके जीवन काल की तो है ही है, क्योंकि उस इबादतगाह का जो मुंह है वो यरूशलेम की तरफ हो। ये यहाँ रहते थे, व्यापार करते थे, और उसके साथ वो एक कॉलोनी भी गुजरात के एक खंबात वाले इलाके में बन रही थी। मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ पर काम होना चाहिए कि मराठी भाषा में जो इतने सारी शब्दावली है, उस पर इस ढंग से भी विचार होना चाहिए कि क्या ये उस समय की देन है। फारस से तो, ईरान से तो हमारे संबंध
जग जाहिर है इतने पुराने रहे कि ईरानियों का यहाँ से आना जाना दरियस के टाइम से, उसके बाद खुसरो के टाइम में बराबर बना रहा। इतना आदान प्रदान हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के जिस महल का जिक्र ट्रेवलॉग करता है तो वो बताता है कि वहां पर अग्नि जलाने का मंत्रिमंडल की जब बैठक हो या कुछ खास हो तो उस पर अग्नि को, पवित्र अग्नि को वहां पर प्रज्वलित किया जाता था। बाल धोने का भी एक उत्सव मनाया जाता था जो ईरान से आया हुआ था। हम ये जानते हैं कि मौर्य काल में बहुत सारे शासकों के यहाँ ईरान से सेवकों को और अंगरक्षकों को बुलाया जाता था, आते थे। ये एक लंबा रिलेशन है। इस रिलेशन को हम खींच करके वहां लेकर के पहले आ जाते हैं, वहां पर हम पीछे जाते हुए वहां पर रुक जाते हैं जहां से ये राज सत्ता पर मुसलमान कायम होते। मुसलमान मैं कह रहा हूं, इस्लाम की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन वहां पर भी हम एक चीज जो हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है वो ये है कि ये जो आए इनको विदेशी हैं, गैर हैं। भाई गैर तो आप जानते हैं, गैर तो आकर के वहां पर बसेगा। इनमें से एक भी जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, एक आप नाम ये बताइए कि जिसका अपने मूल स्थान से जहां से वो आया था वहां से उसके बाद भी संबंध बना रहा हो, वो भी हम जानते कि नहीं रहा। फिर एक भ्रांत धारणा ये है कि साहब ये जो इस्लाम फैला यहाँ पर वो तलवार की धार पर फैला। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। अगर, और हम जब हिंदी साहित्य में कम से कम जब हम पढ़ते हैं भक्ति साहित्य के बारे में तो एक बड़ी धारणा यह है कि मुसलमानों के आक्रमण के बाद हिंदू जनता के मन में जो करहा थी वो करहा भक्ति साहित्य में फैली। इसका प्रतिवाद भी किया गया है लेकिन वो बहुत धीमा है, बहुत नीचा स्वर है। हम ये जानते हैं कि इस्लाम का एक और वर्जन लेकर के, एक और, बल्कि वर्जन कहना ज्यादा गलत होगा, वर्जन की जगह पर एक टाइप और आया जो तसव्वुफ के तौर पर आया, सूफिज्म के तौर पर आया। ये तो आक्रमणकारी नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि एक लंबे समय में जो सिंथेसिस हुई है, आज हम जरूर ना ढूंढ पा रहे हों कि हमारे पास यूनानी शब्दावली कितनी है, हम ये ना ढूंढ पा रहे हों कि हमारे पास हूणों की कितनी शब्दावली हमारे पास मौजूद है, गुर्जरों की कितनी शब्दावली मौजूद है, ये हम ट्रेस करने की कोशिश ही नहीं करते। हमें करने की जरूरत होगी। कितना ऐसा है संस्कृत में जो हमें दिखाई दे, ढूंढे अगर हम, संस्कृत में भी ढूंढे और प्राकृतों में तो आसानी से मिल जाएगा। प्राकृतों में तो जो शिलालेख में है, इवन अशोक के भी जो शिलालेख हैं उनमें भी खरोष्टी लिपि का भी इस्तेमाल किया है, जो ईरान की लिपि का ही एक नया वर्जन है, अलग वर्जन है, वहां पे पहले से प्रचलित रही है। तो लिपि तो तभी आती है जब भाषा आ जाती है, बिना भाषा के आई हुई लिपि नहीं आ सकती है, ये तो बिल्कुल निश्चित है। अब हम एक और चीज पर, जिस पर मैं खास तौर पर आपका ध्यान चाहूंगा, वो ये चाहूंगा कि 15वीं और 16वीं, बल्कि हम कहें 14वीं शताब्दी से जो भक्ति आंदोलन हमारे यहाँ शुरू हुआ है, जिसको कि ये मानते हैं अगर हम कबीर को अलग कर दें, कबीर और जायसी को, निर्गुण पंथ को अलग कर दें, तो हम सगुण भक्त कवियों की जब बात करें जिसमें तुलसी, सूर, मीरा वगैरह आते हैं, इनकी शब्दावली पर गौर करने की जरूरत है। मैं आपको, अगर हो सकता है बहुत से लोगों के लिए सूचना हो कि तुलसीदास के यहाँ मय रामचरितमानस के, कवितावली के जो उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, अरबी और फारसी के शब्दों की इतनी लंबी लिस्ट है, और ये लिस्ट जो लंबी है वो फेथ के लेवल के शब्दों की भी है, ये खेलकूद के शब्दों की भी है, ये वाद्य यंत्रों से संबंधित शब्दावली भी है, ये जंग के मैदान की जो शब्दावली है वो भी शब्दावली है। ये सारी की सारी हमको दिखाई पड़ती है। और तुलसी को बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी ये नहीं लगता शायद कि वो किसी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत मशहूर चीजें तो आप लोगों की निगाह से गुजरी होंगी, जो जब ये आंदोलन चला था
उस वक्त में बहुत सी चीजें तुलसी की ऐसी कोट भी की गई थी, ऐसे मांग के खाई वो मसीह को सोई वो, लेबे को एक न देबे को दो। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन ये अकेली चीज नहीं डॉक्टर है। अजय बिसारिया जी, अ, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कंक्लूड। मैं समझ रहा हूँ। इसी तरह से सूरदास के तुलसी के लगभग बराबर की शब्दावली मौजूद है, मीरा के यहाँ वो मौजूद है, रहीम को हम छोड़ दें। दरअसल परेशानी सारी हमारी ये है कि हम ये जो साझी संस्कृति का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, उसमें हम दो अलग अलग आइडेंटिटी मानते हैं, और हम फारसी या अरबी की परंपरा को सिर्फ इस्लाम के साथ जोड़ करके मुसलमानों के साथ जोड़ लेते हैं, और मुसलमानों को हम उसका पार्ट नहीं मानना चाहते। संभवतः इसी वजह से हम ये सारी बातें करते हैं। इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। ये गहरी एक साजिश है अलग बनाए रखने की। साझी संस्कृति बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में अच्छा नहीं, क्योंकि वो दो उन अलग आइडेंटिटीज को हमारे सामने पेश करता है। वैसे भी हम सभी ये जानते हैं, मानते नहीं उस बात को कि कल्चर, संस्कृति जो है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की होती है। हम ये भी जानते हैं कि उससे पहले जब हम इसकी बात करते हैं तो हम बौद्धों की, जैनों की और दूसरे जो फेथ यहाँ पर रहे हैं उनकी परंपरा को भी हम पीछे छोड़ देते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कि मुसलमान और हिंदुओं की, तो फिर हिंदू कौन था उस वक्त? क्या उसमें जैन शामिल थे? क्या उसमें बौद्ध शामिल थे? या उसमें सिर्फ सनातनी थे? या शैव और दूसरे शाक्त भी शामिल थे? या केवल शैव, शाक्त और वैष्णवों को मिलाकर के हम हिंदू कहते हैं और बौद्धों को और जैनों को नजरअंदाज कर देते हैं? तो जहां इसकी बात है, ये जो इन्फ्लुएंस है वो तो होना ही होना है, आदान प्रदान पूरा हो रहा है, और हमें देखने की जरूरत है कि जो भाषा बन रही है, भाषा बनेगी कैसे? भाषा बनेगी तो इसी से कि किस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं। जो जी रहे हैं वो एक सा है, एक सी एक भाषा बन रही है। क्या हम तुलसी को, मीरा कहती है मैंने चाकर राखो जी, ये चाकर कहाँ से आ रहा है? कहती है अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बौरानी, ये पर्दा कहाँ से आ रहा है? इतनी बड़ी वो चीज दिखाई देती है, ये हमको दिखाई देता है। क्या हम इन आधारों पर तुलसी और सूर को, क्या हम उर्दू का कवि मान लें? अगर हम शब्दावली से मानना चाहते हैं तो क्या हम उन्हें उर्दू का कवि मान लेंगे? इन सारी चीजों पर एक विचार की मुझे लगता है जरूरत है। इसकी भी जरूरत है कि हम जो है एक बार फिर से सोचें कि हम जो बेहतर सोच करके जो करने जा रहे हैं, क्या वो उन्हीं चीजों को तो बढ़ावा नहीं दे रहा जो हमको अलग कर देना चाहती है। धन्यवाद, शुक्रिया। साझा संस्कृति पर आपके विचार साझा करने के लिए आपका अधिक धन्यवाद, डॉक्टर अजय बिसारिया जी। So, ladies and gentlemen, so far we have had 4 speakers. Dr. Alexander Jabbari, Dr. A.K. Munir, Professor Shambhunath Tiwari, and Dr. Ajay Bisaria. With the permission of the chair, the floor is now open for the questions from the audience. Munir sir, could you please come here? How much content of Arabic is there in that, and how much content of Malayalam is there in that? Is it a mixed kind of language? And then, what is the main content of this mala, which you refer to in your film? Thank you so much. Lexically speaking, and I'm not a linguist though, but my attempt has been to actually use this material, this corpus of writing, in Arabic Malayalam, which some people, and I don't agree with that sort of a formulation, but conveniently call it, as Malayalam written in the Arabic script. Malayalam written in the Arabic script. But it's not just that, I would argue, because it's also a dialect in its own right? And there is a reason why Arabic is used, because there's historical reason. For example, this language mixture or hybrid language, which I might call Arabic Malayalam, has flourished in the crucible of
lots of networks that flourished again in the wider Indian Ocean world. Yeah. So there are networks of trade to begin with, travel networks, Sufi networks, for example, and again networks of scholarship. There are a lot of ulama, traveling from one place to the other across the Indian Ocean world, right? And Malabar and Islam came to Malabar not through Bar, that is the land, but Bahr, right, the sea, right? And therefore, the kind of the polyglossic, that space which flourished along the shores of, the littorals of the Indian Ocean, that actually gave rise to this language mixture. But now, lexically speaking, Malayalam dominates, this mixture, or the language hybrid, if we may. Yeah, and also grammar, grammatically, at the level of, say, for example, at the level of morphology, word formation. But Arabic also plays, a heavy role in that, because lexically, and also the content of the language is Malayalam, but lots of words, are also borrowed from Arabic, but also from other languages. But the most important point about this hybrid dialect is that, certain things were not translatable, like quote unquote, into Malayalam, particularly concepts, ideas freighted with religious sort of content and significance and import. And therefore, there arose a need for Mapila Muslims at a particular juncture, because the earliest extant work available to us today dates back to the early 17th century, the Muhyiddin Mala, 1607. But if you really look at the text, it comes to us in a far more advanced form, which actually shows that the language hybrid has been existing on the Malabar coast for a long period of time, even in the 17th century. So it's not Malayalam, it's also not Arabic, and therefore one has to actually develop an imagination, in order to imagination with which we can actually understand this language hybrid. So there are Mapila scholars who argue that it is a unique language. Again, that's a problem from a linguistic point of view, because then what is a language? Since when one language, like where one language ends and where another begins is also, like in the case of Hindi, Urdu, also, the debate is quite perennial. Yeah, different, but there also the question of where does one language begin, and the other end also is pertinent to that debate. Yeah. Malayalam Arabic, there is no change in grammar. Grammar is the same. The only thing is the issue of dialect. Grammar is same, syntax is same, and in Arabic itself, in colloquial Arabic, when you travel to Egypt or Syria or Iraq, you will find, you will listen to the native, the dialect is changed from the Fusha or from the standard Arabic. So Malayalam Arabic is, as the speaker described, it is the dialect. The origin of Malayalam words is Arabic, but it has been somehow changed in speaking or in forming the sentences. Thank you very much. Any other question? Okay. My question is to Mr. Munir, that when he was speaking of the bilingual relationship, okay, the question is,
Can you cite an example of with a sentence or a passage or a paragraph like Hebrew and Arabic are very close and they belong to the same family as per Professor Gyan Jain in Lisania, his thesis. The Hebrew sentence, which has not yet been translated into any versions and editions of the Bible up to now, that remains in the original language is Eli, Eli, lima sabachthani. This Eli, Eli, lima sabachthani is both Hebrew and Arabic, right? So, can you please cite an example which you have just lectured? Actually, this language hybrid also comes to life at its performative level. I mean, even as it exists in Malabar. I mean, people actually recite it, read it, and therefore the level of one has to also hear this, not just the question is really pertinent to the whole sort of set of ideas I was talking about. So the Muhyiddin Mala begin like Allah tiri perum tudiyum solavatum adinal tudanguvan aruchaida bedambar. See, so people like, it's not text which you can simply silently read, and that's why I emphasize those performative dimensions. It's a text that comes to life in performance, right? And not only reading the text but also listening to it in the tradition, within the tradition, is a meritorious act. It brings in, you earn funds of merit and numinous value, not only by writing this. Even composition is important, but then even copying. Can you bring give an example which can be so close like Eli, both Hebrew and Arabic? Yeah, for example, in the Mahid, in the Nafisat Mala. Let me just quote from another Mala because there are so many. So this is another Mala text which is dedicated to a female, saint, that is Nafisat Mala. So it begins like Bismiyum hamdum salatum nal salamum munne. Arabic mal Bismiyum ham. But you see, Bismiyum, it's already vernacularized, right? Bismiyum hamdum salatum nal salamum munne. Billine fisat mala nyan tudangidunne. Mushafiun mufal. Lexically Arabic. Through and through. Mushaffi'un mufallil. Yes. Mushaffi'un mufallilum muqaddamum nurullah. Holy are through and through. Musilum muhayminum muballighun sa'dullah. And there, yeah, there are also, I mean, you cannot, they exist in a form, sometimes a whole Arabic passage is inserted into the text. And sometimes, like in the case of Bismiyum Hamdum Salatum. No, grammatically it's Malayalam. Yeah. No, grammatically, that's why I said. Yeah, grammatically lexically, even morphologically, although I am not a linguist, it is Malayalam, right? But my point is, you cannot reduce this whole textual language tradition to just Malayalam. Okay? I mean, the qualifier Arabic means a lot, and one has to actually pay attention to that as well, rather than reducing it to another Malayalam, as such. मुनीर साहब थोड़ा सा वजाहत है ये हर्षवर्धन के दौर में अरब से काफिले आते थे यहाँ केरला के साहिल पर और उस दौर में तिजारत के काफिले आते थे और बिजनेस के लिए आते थे यहाँ से भी कुछ चीजें ले आते थे वहाँ से भी लाते थे शायद उस अमल के जरिए से अरबी जबान के वर्ड्स यहाँ केरला मलयालम जबान में शायद इस्तेमाल हुए होंगे तारीख में मैंने पढ़ा है Yeah, this is not something that is only unique to Malabar. Such practices can be also observed elsewhere. For example, in Tamil Nadu, on the Coromandel coast, we have a similar tradition, textual tradition called Arabi, Arabu Tamil, right? And
Also in Southeast Asia, like we have Javi, and that's what Rory Rishi has actually, researched, and she has written a book on the Arabic cosmopolis of Southern Southeast Asia. Also in Africa, as far as Africa, you have this tradition of Ajami, right? That is again African languages written in Arabic. So you have a very rich, word historical event, in the form of this hybrid culture existing, particularly along the Indian Ocean, influence, but also elsewhere, because you also see in Sindh, for example, also in parts of North India, you have similar traditions, where Arabic or what is even called an Indian Ocean Arabic. There is something called Indian Ocean Arabic. Dr. Munir, I apologize, I have to interfere. As per the instructions of the chair, we need to stop the question answer session here. And this is the beauty of the intellectual exchanges. And I'm sure the discussion can continue during the tea break. Okay, thank you, everyone. And it is indeed a pleasure for me to introduce our chair. It is an honor for all of us to have Dr. Syed Sajjad Hussain, who is a distinguished scholar and academician. Sir retired as a professor and head Department of Urdu, University of Madras, and is presently serving as visiting professor at Bangalore University. Sir is the recipient of prestigious awards, including the Maulana Abdul Kalam Azad Award and the Lifetime Achievement Award. Dr. Hussain continues to contribute actively to the promotion and advancement of the Urdu language and literature. It's indeed an honor for all of us to have you served as the chair of this session, sir. I invite you to deliver your remarks. Respected paper presenters and the audience who have listened to 4 papers presented by the scholars. I'm so happy that the 4 papers which were presented here were not just a reader, but all the scholars tried to spoke, गुफ्तगू की उन्होंने, जो भी पेपर उन्होंने पेश किया है, all the papers almost, and very interesting discussions were also took place. So many questions raised, and scholars gave the reply, satisfied them. This interesting session concluded. First paper was presented by Professor Alexander Jabbari. I congratulate him for his scholarly investigation with regard to the sacred grammar of Persianate Islam. This is a really very good paper presented by Jabbari. He began his talk with the emergence of Persian grammar in the history of Persian philology. He also raised, while presenting the paper, some valid questions. Why and when the tradition developed in Persian by drawing comparison to Arabic, Sanskrit, and Chinese and other languages, arguing that differences in these in both linguistic literature structure and also sources of linguistic authorities. The very in-depth study of his paper,
reveals that really the Abbasi Jabbari has good command over his studies. He in his paper closely analyzed the earliest form of grammar of Persian written in language, Minhajul Latab, by high Muslim scholar in Eastern China. He also discussed by explaining Persian multiple variances from Allama Iqbal epic poem Javid Nama. This is really a good paper presented by Jabbari. I congratulate him for his valuable paper. The next paper presented by A.K. Munir. He is from AMU, English Department professor. Basically, he hails from Kerala, I think, Mr. Munir. His valuable paper on text of Mala, different Mala, forms of Mala, is a very peculiar song sung during the weddings. Is it not? During wedding, not necessary. Anyhow, so it is a very good paper, and we don't know about what is Mala, and Malayalam based Arabic language is used in that particular Mala genre. And when ladies sing this song, we feel very not only we feel very happy, but at the same time we feel that this type of Mala songs, which is very familiar in Malayalam community, particularly in Malabar region. So I am very happy that Munir has presented Mapilla Muslim literature, which is unknown to so many people who are sitting here. He also brought to light devotional performances, which are in the form of Mala, and he discussed successfully and also satisfied the audience by his reply. Professor Mustafa Sahab asked some questions. He replied them very beautifully, successfully, and he satisfied all the audience here. Next scholar, Shambhunath Tiwari, presented his paper without looking his tab. He just spoke, and we have not given him time. Otherwise, he would have continued for more than 1 hour. Beautiful paper. He also presented his paper in Civilizational Consilience through linguistic, literary, and cultural exchange between Sanskrit, Hindi, and Urdu. He quoted some beautiful Hindi and Urdu couplets to highlight the literary and linguistic exchanges took place among these languages. मीर के अशार भी पढ़े उन्होंने, छंद और भजनों के हवाले से भी गुफ्तगू की, बड़े अच्छे अशार उन्होंने पेश किए. मुझे ऐसा लगा कि एक उर्दू का स्कॉलर ये मकाला पेश कर रहा है. बहुत अच्छे सलीक़े से उन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की. नॉट ओनली हिंदी बट उर्दू के हवाले से भी उन्होंने बहुत से अशार आपके सामने पेश किए. Apart from that, he examines these intellectual
paper and brought to light so many things which we are not aware of. तिवारी जी हिंदी के प्रोफेसर हैं और उन्होंने तहजीबी जो एक्सचेंज होता है, लेन देन, उसके ताल्लुक से बहुत ही पुरमग़ज़ गुफ्तगू की और बताया कि हिंदी, उर्दू और संस्कृत ये तीनों ज़बानें को हम अलग कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक़, इनका रिश्ता कहीं ना कहीं आपको ज़ाहिर हो जाता है, चाहे वो छंदों के ज़रिए हो, चाहे वो भजन के ज़रिए से हो। फिर वो गाने वाले, उनका नाम मोहम्मद रफ़ी का भी नाम लिया, बहुत से डिवोशनल सॉन्ग्स मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया है। तो इस तरह से एक जो लेन देन है, जो रिश्ता है इनके दरमियान, तहजीबी, सकाफ़ती और अदबी, उसकी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी गुफ्तगू हमारे सामने रखी और उस गुफ्तगू में मैं समझता हूँ कि वो कामयाब भी हुए हैं। आखिर में अजय बिसारिया, ये भी UMU से हैं, मुश्तरका तहज़ीब के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। अरबी और ईरानियों की तहज़ीबी जो ताल्लुक़ात रहे हैं और हिंदुस्तान में ईरानियों की आमद के ताल्लुक़ से, और फिर खुसरो के दौर के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। तुलसी के हवाले से ख़ासतौर पर उनकी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प रही। वो इस तरह से तहज़ीबी जो मुश्तरका तहज़ीब है हमारे हिंदुस्तान की, तो उस पर उन्होंने रोशनी डाली। जाहिर सी बात है कि हमने उनको मौका कम दिया, लेकिन उस कम मुद्दत में भी उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ अपने ख़यालात का इजहार किया। I congratulate all the 4 scholars for their very good presentation, and also the audience who gave patient listening to them. Once again, I express my heartfelt gratitude to all the scholars who are here, presented their papers. I hope you fully satisfied with this session. Thank you very much. On behalf of all of us, I extend our deepest heartfelt gratitude to our distinguished chair today for having kindly accepted our invitation to chair this session and shared his very insightful words, remarks, and comments on today's talks. So congratulations to all the 4 speakers, Dr. Alexander, Dr. Munir, Professor Shambhunath Tiwari, and Dr. Ajay Bisaria, on having received such appreciation from the distinguished chair. Thank you to all the participants who asked questions to enrich the discussion, but I apologize, we could not take in more questions because of the paucity of time, and a very big thank you to all of you. Thank you, everyone. The session, yeah. A quick tea break, and then we continue here in the CPDMT auditorium.